And on the program this evening, I have a guest tonight. I am very moved to have her with me on the program. Viewers, I am honored and deeply grateful to Pallavi Rao, wife of Martyr Manjunath Rao. Martyr Manjunath Rao, who was killed in the Pahalgam terror attack. And the pictures we have are of Manjunath ji and Pallavi ji in a shikara. I think that would be at the Dal Lake just before they went to Pahalgam. Pallavi ji, I want to thank you first for coming today. When I was told by our coordinators that you are coming, I was very moved. I was speechless. And I think you're very brave. You're very brave to come and speak to us today. So thank you on behalf of all of us here at the Republic Media Network. And words cannot express our deepest condolences to you and to your family. And I want to start with just one moment of prayer for Manjunath ji and for all the 28 people who have been martyred in Pahalgam. And if you're watching this tonight, we must all stand together with Pallavi ji. Pallavi Rao ji, the whole country is with you. I'm with you. Our network is with you. Every countryman, everyone is with you. You are not alone. Thank you for coming, Pallavi ji. Thank you, first of all. Can you hear me? Can you hear me, Pallavi ji? आपको मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Louder, yeah. मैं आवाज आ रही है सर. आवाज आ रही है. पल्लवी जी, आपसे उस दिन फोन पे बात हुई थी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो हमारी कंडोलेंसेस आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस दिन क्या हुआ, आप क्या कह पाएंगी? उस दिन जो टेररिस्ट अटैक हुई, उस समय आप और मंजुनाथ जी कहाँ थे? आप अगर जो भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सके, पहलगाम में जो हुआ. हम 22 को पहलगाम 12:30 आफ्टरनून पहुँचे. वहाँ से हम तीनों, मेरे पति, मैं और मेरा बेटा, 3 पोनी हायर करके जहाँ हादसा हुआ ना, वहाँ हम पहुँचे. हम जस्ट वो घोड़ों से उतरे थे. 2-3 मिनट था, हमें फायरिंग का आवाज़ आया सबको. तो हमने समझा कि कोई आर्मी का ही टेस्टिंग चल रहा है या पटाखा फोड़ रहा है. तो हम सब लोग ने उसको इग्नोर किया. और 2-3 मिनट के बाद फिर से ऐसे ही फायरिंग की आवाज़ आई. तब भी हमने ऐसे ही समझा और इग्नोर किया. उसी समय हम कुछ स्नैक्स खाने के लिए वहाँ परचेस करने के लिए मैं और मेरे पति उस स्नैक्स के दुकान के पास गए थे. तब मेरे पति ने बोला, जाओ बेटे को लाओ. वो कुछ 100 मीटर्स दूर पे बैठा था. मैंने उसे लेकर आने को गई. तब मैंने देखा कि और कुछ लोग भाग रहे हैं और फायरिंग होने लगा. तब मैं और मेरे बच्चे मेरे पति के पास आ रहे थे, तो मुड़कर देखी, उनके तो शॉट डेड हो गए थे. वो जहाँ खड़े थे वहीं पर नीचे गिर गए थे. और उस समय जिस आतंकवादी ने इन पर गोली मारी, वो वहीं पे थे? हाँ, वो वही ढूंढ रहा था कि आगे किसको, वो घूम रहा था वो गन लेकर. तो मैं और मेरे बेटे दोनों भी हम दोनों चिल्ला रहे थे. और हम दोनों ने उस पर चिल्लाई, क्यों जब मेरे पति को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो.
तब वो वहाँ खड़े रह के बोला, नहीं मोदी को बोलो, उसने कहा और वहाँ से निकल गया। और वहाँ एक कपल पड़ा था, उसमें उसके हस्बैंड को कुछ चोट लगी थी। उसने उसके पास गया और उसको 2 बुलेट्स उसको हेड पे ही शॉट किया। जो इंजर्ड थे उसको और फिर एक बार शूट कर दिया। हाँ, क्योंकि वो उसकी सांस चल रही थी ना, इसलिए उसने हेड पर ही शॉट किया। तब जब आपने आतंकवादी को कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को मारा है, मुझे मार दो, आपके लड़के आपके साथ थे, आपके बच्चा जो आपका था, आपका लड़का आपके साथ था, तो आप बिल्कुल भागे नहीं, आपने बिल्कुल कन्फ्रंट किया। हाँ, आपका बेटा आपके साथ था। हाँ, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। उसने भी गुस्से से बोला, हाँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। हमें कोई मौत की डर ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पति तो गए, हम रहकर क्या करें। इसलिए हमने, मेरे बेटे ने भी उसे बोला, एक कुत्ते मेरे पापा को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। तब उसने ऐसा बोला। तब उसने बोला, आप मोदी को बोलो, और ये बोल के चला गया। उसने बोला, नहीं मोदी को बोलो, चला गया। और मैंने बोला ना, वो दूसरे कपल वो पड़े थे, उसको मारा। और कुछ लोग दुकान के पास हाइड करके बैठे थे, उन्हें जाकर वो मार रहा था। जहां पे लोग जा रहे थे वो गन लेके उनको मार रहा था। मंजुनाथ जी, भारत के जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मार रहा था, भारत के जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सलूट करता हूं आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपकी हिम्मत को और आपकी सोच को। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, पूरी भारत की जनता आपके साथ है। पल्लवी जी, आप अकेले नहीं हैं। वी आर ऑल विथ यू। और जो बात है जो आपने कही ना कि गो टेल मोदी, जो आपने बात कही पूरी वायरल हो चुकी है, भारत के लोग देख चुके हैं। मैं जानता हूं ये मैसेज प्रधानमंत्री तक भी गई होगी। मोदी जी हैज गॉट योर मैसेज। आप मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये प्रोग्राम के जरिए आपकी मैसेज प्रधानमंत्री जी तक जाए, पल्लवी जी, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, थ्रू द प्रोग्राम? आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट दैट, जैसे मैं हमारे गांव में, मैं शिवमोगा में रहती हूँ, कितना सेफ है, इतना ही सेफ मुझे मेरे पूरे देश में चाहिए। जो भी हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो और बेंगलुरु, कुछ भी शहर हो, जे उतना सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वहाँ वो आतंकवादी खुलेआम जैसे शॉपिंग मॉल में घूमते हैं ना, ऐसे घूम रहा था। कुछ उसके मुंह में, मैंने उसे देखा तो उसे कुछ भी डर नहीं था। लेकिन हम लोग यहाँ भारतीय बन के, ये हमारा देश है, हम डर के रह रहे हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमारा देश सब जगह सेफ होना चाहिए, और ये हमारा देश है। जैसा हमारा घर हमें सेफ है, हमारा देश हमें सेफ होना चाहिए। हम कहीं भी चले, हमें डर के नहीं रहना चाहिए। जो टेररिज्म जब चल रही है, उसे जड़ से निकलना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरे, बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए कि वो आतंकवादी जब भारतीय ऐसे वो सुने तो उन्हें कांपना चाहिए। ऐसे हमें बनना चाहिए।
डर उनमें होनी चाहिए, हम में नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने पल्लवी जी। They should be afraid, not us. This is our country. You are a really, really brave. नहीं है। आप बहुत brave हैं, आप बहुत strong हैं। Yes. You are a Yes, picture of this strength. This is our country. This is India. This is Our country, yes. This is India. I am Indian. We are Indians, and from Kashmir to Kanyakumari and everywhere. This is my country. This is our country. This is my country. So wherever I go, I should feel this is my home. But it is now. It is situation is like that. We are going and hiding for our lives, but they are roaming just freely, as if they are doing a very good job. So, but it should not be like that. They should, if they hear the word India or Indians, then they should वो क्या उन्हें वो कांपना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो कांपेंगे, they'll be very scared, Pallavi ji. Especially when they see your brave and stoic response. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। We will take full revenge from these Pakistanis. We will break and destroy Pakistan this time completely. Pallavi ji, thank you very much. My deepest condolences. My deepest condolences to you. These coward Pakistanis will pay. These cowards, these Pakistanis who killed your husband and then told you, but I think you're so brave, you faced that Pakistani terrorist, he couldn't face you. They're cowards, Pallavi ji. And we are Indians, we are Bharatiya, we know how to take them on. We'll finish them this time. Thank you, Pallavi ji. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I have, before I welcome in, please get the chairs in. I have the BJP spokesperson Charu Pragya with me, General G.D. Bakshi, General K.K. Sinha, Major Samar Paltur. Pakistani guests, their names please. I have with me Brigadier Waqar Khan and Barrister Rashad Khan. And we heard Samar, I want to start with you. You heard Pallavi Rao speaking there. That is our spirit. She said we have to put the fear back in these people. We will get them, Samar. But I saw that stoic strength in Pallavi's voice. You know, when they told me she's coming on the program, I couldn't believe it. But that is the strength of Bharat. She came resolute. She said, now we put the fear in these people. Samar, your response. You heard this. You must have been moved as well. Samar Paltur, please. Louder. Lots is going on last 48 hours. And firstly, my condolences to all the victims. It's beyond expression. Thank you. Whatever I say wouldn't make up to things at all. And let me just make one thing very clear, that why is the Pakistan government behaving as if the terrorists have outsourced its task to the Pakistan government? Why are they in panic in terms of their army, navy and air force? We have not given a statement. We have not mentioned the word of Pakistan. We have only mentioned war. We have declared war on terror, war on terrorism and terrorists and those who are backing them. Ab backing them mein, if chor ki daadi mein tinka, that is the reason why they are, issuing NOTAMs. They are high alert. Their aircrafts are, literally patrolling all night. Trust me, we are not going to do anything right now. We are going to stretch you so far ahead. We are going to tire you out mentally and then we are going to move in. And जहां तक कल में पढ़ने की बात है ना, मतलब आतंकवादियों के सर हम कलम करेंगे, मतलब सर को धड़ से अलग करना हमारे लिए वो कलम होता है, ठीक है। और जहां तक आतंकवादियों का कलमे की बात है, ठीक है, फेयर इनफ, जो भी है, you will get it back in the worst possible way. Now, one more message that I need to give to the so-called, petrified neighbor,
that Keep changing on the right. an ex-Pentagon official gave a statement. Louder. I'm quoting, an ex-Pentagon official gave a statement. If you put lipstick on the pig will still remain a pig. It's not, it's said by an ex-Pentagon official. So you very well should know that all the diplomats who have been briefed today evening are in a real good mood to have Pakistan's happiness. Enough that ISI has gone to bed with CIA and the Chinese intelligence agencies, and now you wait and watch how Taliban is going to hammer you, how Iran is going to have your happiness, and how Baluchistan is going to screw your happiness, because you are just whining for one Jafar Express. Were you so incompetent? Were your attack helicopters so incompetent that you could not handle one train siege, and you're putting the blame of 200 who were killed in that train, Jafar Express, on India? I mean, we have no interest in your land. We are not interested. We don't want anything. We don't have trade with you. We have no connection with you. No, the Pakistanis And now have, with this incident, the you Pakistanis have isolated already yourself. started defending the terrorist General Bakshi, and they have said that, I think this is Ishaq Dar or some fellow called Ishaq Dar. Who is he? Some deputy prime minister or something? Yeah, okay. So he said these are freedom fighters and we support the freedom fighters. He says these are freedom fighters. He refers to the people who carried out the Kalma test, who asked the Hindus to read the Kalma, to identify them on the basis of their religion, General Bakshi. The Pakistani deputy prime minister and foreign minister Ishaq Dar has described them as freedom fighters. So in other words, they're also immediately carrying out a defense of it. I want to play the soundbite. General Bakshi, just look at this. An official, just look at this, Charuk Pragya, an official defense of the terrorists. At least in the case of Osama bin Laden, they said, we don't know where he is. But here they are saying, these people who have killed Indians point blank are freedom fighters. Wipe the smile off your face, Brigadier. Otherwise, we'll give you such a tight slap that you will not be able to move an inch after that. So wipe the bloody smile off your face. Do you get that? Wipe the bloody smile off your face. Reduce his volume. Wipe the bloody smile off your face. If you can't debate with me and you want to run away like a Pakistani coward, there he's disappeared. The Pakistani coward brigadier is trying to run away. Come here, brigadier. Come here. Yeah, put on your glasses. Fix your camera first. Get straight. You crooked Pakistani brigadier, you want to smile on my program, you have no sense of remorse, you have no sense of what's coming for you. Don't deserve to be, attended to. It's not running away, it's just badtamizi that you are No, doing. बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी आप कर रहे हो, बदतमीज आप हो, बदतमीज तो आप हो, नंबर 1 के बदतमीज हो, जो हंस रहे हो जब मैं कह रहा हूं कि आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इन आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहा. It's not rhetoric. It's not rhetoric, you foolish brigadier. It's not rhetoric. I'm quoting your prime minister. You're calling your deputy prime minister a fool on an Indian channel. Should I play his bite? Should I play what he said? Don't shout. Play it. Don't shout. Don't shout. I have every right to shout at you 1,000 times over. ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं. वी डोंट नो कि कौन है. तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अजाइम जो उनके अंदरूनी है. First of all, these Pakistanis are looking very glum and scared, and they should be, because they know we are going to bite them so hard this time, these Pakistanis. We're going to slap them so hard this time. We're not even going to return their soldiers back to them. Yeah, Brigadier, what are you shouting about? What's your problem? At least, give time for argument. It can't be one-sided, No, it's not one-sided. I said wipe the smile off your face. Yes, it is one-sided. I said wipe the smile off your face. Is that one-sided? I said don't smile when you're on a program like this. कुछ गलत कहा क्या मैंने? Absurd argument going on. Argument नहीं है, ये argument नहीं है, ये request है. Argument क्या है? It's a statement to take the wipe the smile off your face. It's a request. We have heard Modi last time in 2019, we gave a bloody nose. You try it this time, Sister Todd will burn
Delhi, it will burn Kolkata, it will burn Mumbai, it will burn everything. So be my guest and let's see. I think let's have this war. We have also been, I think, waiting for this rhetoric. Good. POK pe aa jayenge. Good. aa jao. Good. I think Thank you very let's have much. a General fight. Bakshi is responding. Thank At you. least The listen to Pakistanis are saying we are waiting for war. So it's very good. You'll have no problems because INS Surat is already carried out a precision strike out there. And we know exactly how much time it will take for our T-90s to navigate You can 20 come. kilometers per hour. We know how long it will take to hit Rawalpindi. We know everything. If we send our Sukhoi Mk-3 we know our destroyers, how far they are from Karachi. Stop crying. Stop crying. Stop crying. You know how long it will take the Apaches to reach? How long did it take the Apaches? Tell me one thing. You speak so much. इतना बोलते हैं आप. मगर जब अपाचीज अंदर आ गए, अमेरिकन सोल्जर्स ने आके ओसामा को मारा और वापस निकल गए, और जब बालाकोट में स्ट्राइक की, जब वापस निकल गए, उस समय आपने रोना धोना छोड़ के क्या किया था? What did you do? हाँ? Shot down 2 aircrafts. Yeah, what did you do then? What did you do? What did you do when the MiG-21 shot down the F-16 and Abhinandan was there? You looked at Abhinandan and his big moustaches. You got scared. We told you we're going to hit you. In your assembly, आपके assembly में, your politician said, Fawad Chaudhary said, please for God's sake इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो 9 बजने के पहले इंडिया हमला करने वाली है. और आपने छोड़ा, आपको छोड़ना पड़ा. चाइना ने भी बोला, you've gone too far with the Indians. China told you then, Brigadier General Bakshi is on the debate. I have everything documented about you guys. General Bakshi, they're inviting. They're saying, okay, let's have a war. General Bakshi, let's have a war this time with these guys. Let's have a war. Louder, both of them. Louder. Yeah, come on. Arnab, Let's have war. Arnab, I'd like to tell this brigadier. आपके जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर होने वाले हैं. जब भी आपका कोई जर्नल रिटायर होने वाला होता है, वो गद्दी से चिपक जाता है. वो गद्दी छोड़ना. सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए. ठीक है जनाब, बड़े ध्यान से सुनिए. And then I'd like to listen to your response. जब भी कोई आपका जर्नल रिटायर होने वाला होता है, वो बहाना ढूंढता है कि किस तरह वो गद्दी से चिपक जाए. ठीक है. आसिम मुनीर साहब ने आज से 6 दिन पहले एक बयान दिया आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे उनकी महफिल में, और कहा कि 2 नेशन थ्योरी को उन्होंने दोबारा दोहराया और कहा कि साहब हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते. ठीक है जनाब. उन्होंने कहा तकरीबन सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर करी इंडिया के खिलाफ. 6 दिन बाद आपके भेजे गुर्गे आतंकी वो वहां पे पहलगाम में आए. औरतें, बच्चे और जो वहां पे निहत्थे टूरिस्ट थे उन पे गोलियां बरसाई, पूछ के मारा कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, कलमा पढ़ो, ये करो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह. और औरतों के सामने हस्बैंड को मारा, बच्चों के सामने बाप को मारा. ठीक है. मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आसिम मुनीर साहब अगर एक्सटेंशन चाहते हैं, ठीक है साहब, तो वो लाखों लोगों की बलि ना चढ़ाएं पाकिस्तान में, हजारों की बलि ना चढ़ाएं पाकिस्तान में. ठीक है. उन्होंने एक इलेक्शन स्टील करी है इमरान खान की. 1971 में भी आपकी फौज ने एक इलेक्शन, स्टोलन इलेक्शन करी थी बांग्लादेश में. आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे साहब. मैं चश्मद्दीन गवाह हूँ. आई डोंट नो व्हाट सीनियरिटी यू आर, आई डोंट नो व्हाट आर्म एंड सर्विस यू आर, आई वुड लाइक टू नो. बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर खान साहब आपके कजाकिस्तान गए हुए थे. वहाँ से ही केम रनिंग बैक, राइट. आपके कल से जो आपके एरोप्लेन्स हैं और C-130 एयरक्राफ्ट हैं, वो साहब कराची से उड़ के वो गिलगिट बाल्टिस्तान में जो स्कार्दू एयरफील्ड है वहाँ पे आ रहे हैं. आपके छक्के ठंडे पसीने छूट रहे हैं कि साहब कहाँ पे हमला होगा, कैसे हमला होगा. मैं आपको बता दूं साहब कि कराची भी एक टारगेट है. भारत की नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर जनाब आली और भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कराची की तरफ बढ़ रहे हैं. आप कराची खाली करके नॉर्थ में भेज रहे हैं. ठीक है साहब. आपके ऊपर
मुसीबत आने वाली है। अगर आप समझते हैं कि केवल ओवर्ट रिस्पांस होगा, वो भी गलत है। ओवर्ट भी होगा, कोवर्ट भी होगा, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक तो आपने देख ही लिया है साहब। वो तो आगाज था, वो तो ट्रेलर था। ठीक है, आई विल गिव यू वेरी लिटिल टू स्माइल अबाउट, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है साहब, हमारी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, हमारी फोर्थ लार्जेस्ट नेवी है, हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और ये सब अब आपकी तरफ तैयार हो रहे हैं। ठीक है, And it is अगर also- आपके आसिम मुनीर साहब को ठंडे पसीने आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, तो वो नेचुरल है। ठीक है साहब, अगर उनको लो बैक एक हो रही है इस वक्त और ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है, तो वो लाजमी है। वी वुड लाइक आवर एनिमीज टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ज्यादा उतावले मत होइए जंग के लिए जनाब। मैं नहीं जानता आप कौन सी आर्म सर्विस के, क्या मैं पूछ सकता हूँ? विच आर्म इन सर्विस आर यू फ्रॉम ब्रिगेडियर? I think give me Which 1 arm in minute. service? I am from 25th Cavalry. Huh? Give me a minute. I am from No, I'm just 25th asking you which Cavalry, arm in Colonel service? तारापुर का tank- Colonel तारापुर का टैंक खड़ा हुआ है मेरी यूनिट में एज अ वॉर ट्रॉफी। सो आई बिलोंग टू मैन ऑफ स्टील व्हिच डिस्ट्रॉयड इंडियन आर्मर्ड डिवीजन इन चिवंडा। अभी आ जाते हैं कि Which arm and service? Armored Corps? Armored Corps? Yeah, I am from नहीं Yeah, Armored I'm Corps. just asking you, let me just finish, then I'd love to listen to you. I'd love to listen to you. Yeah. All right, I'd love to listen to you. Okay. The General ask my unit. Colonel Tarapur's tank is in 17 Pune Horse. Don't worry about Yeah, his it is tank. standing. It is standing. I can show Firstly, you. get your photograph in facts my right. unit now. I don't know what kind of a soldier are you. आपके बाल काले हैं, आपकी उम्र क्या है? हाँ? तूने 65 आपने 65 की लड़ाई देखी है साहब? 71 की लड़ाई देखी है? No, it's not matter of. नहीं, आपके I बाल am काले not हैं, या तो आप रंगते हैं बहुत अच्छी तरह से, या तो आप अपने बाल काले करते हैं बहुत अच्छी तरह से। नहीं, आप 65 की लड़ाई में कब थे? No, I'm asking you, man. कहाँ You're थे talking बोलो? so lightly about war. अरे You're talking अरे so lightly बोलिए about war, quite obvious. बोलिए, आपको इंडियन जनरल पूछ रहे हैं Fighting कौन सी लड़ाई में थे 65 में, जो झूठ बोल दिया इंडियन टीवी चैनल में, छोड़ने वाला नहीं है वो। आपने झूठ बोला, आपको पकड़ा गया, कौन सी लड़ाई में थे? जनरल बख्शी पूछ रहे हैं, पूछता है भारत क्यों ब्रिगेडियर साहब ऐसी क्यों? अभी आपकी स्माइल कहाँ चली गई? आपकी स्माइल कहाँ चली गई? देखिए इन्होंने, he has spoken anyway. General Brigadier, I'll tell you one thing. The point is, General KK Sinha, is a serious debate, and Brigadier Khan Charu, you are here. You know these the Arihants and the submarine destroyers. We don't know. Some people told us, some people told us that these are all now very, very close to Karachi. It can happen anytime, and it takes 11 minutes. It takes We have a 11 minutes, Samar, you know, right? 11 minutes. Samar, am I right? 11 minutes for the submarines, right? And the Pakistanis don't even know where they are because they can't Approximately, yes. detect them, Fatah Bezai takes 2 minutes. right? Samar? And I mean, I want to address one gentleman here. पहले तो gentleman तो ना ही बोलूं मैं. The guy in the yellow tie and the blue coat. I think you left a Twitter, you left a comment on X today that bring it on. Was it It's you? not me. No, it's not me. डर गया अब भाई डरा Okay, नहीं okay. हूँ, जो बात ही Because- नहीं है वो बात ही नहीं है। because- बात सुने ना, आप बात सुनने ही नहीं डर गया, देते, डर गया, ना डर गया। देखते हैं किसी को। पाकिस्तानी The डर thing गया is- Now, listen to me now. See, the thing is- let me talk now. Let me talk now. Yeah. डर गया Stop it here. समर डर गया डरे डुरे नहीं है, बात सुने आप तरीके समर से बात ये करें। ट्विटर में लड़ाई सबसे करते हैं पहले ये तो लोग हमारा सबसे पहले तो नहीं, मेरी बात आप सुने, जो लोग भी आप मेरी बात आप सुने मारे गए हैं, बात सुने और ध्यान से सुने, आप बात सुने और जो मैं बोलने वाला हूँ सुने आप। अपने सर में डाल लेना, अपनी क्योंकि बात ये सुने सर आप। कुछ समय तक ही ये है, कौन क्योंकि सी तुम्हारा बात सर है? कलम होने वाला है। इनको पढ़ना भी नहीं आता। तुम्हें कलमे सुनने का शौक है ना, हमें कलम करने का शौक है, और जब आपका सर कलम होगा तब अकल आएगी। करें आर्गुमेंट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है,
There will be no prisoners this time. कोई 93,000 की खातेदारी नहीं होगी. You must be one of the sons or grandsons of those 93,000 POWs. We will not do the. See, I only tell you this. 1 minute. One minute, barrister. I don't know where you're barrister from, but barrister Rashad Khan. कि पता नहीं हम क्या कह देंगे. बात सुने, हमारी बात सुने प्लीज. ये बात आपने हमें बुलाया प्रोग्राम में, हमारा हक है कि आप हमारी बात सुने. सबसे पहले तो हमारा चलो बताएं, कंडोलेंस है जो आप भी पहले मुझे बताएं कि आपका ये जो जनरल है, आप इनको चुप कराएं. ये जो आपका जनरल है, जो हमारा राइट है कि हम बात करें. नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ. एक मिनट. बैरिस्टर अरशद खान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. एक मिनट, लिसन टू मी. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे. हाँ, ले रहा हूँ आपकी पॉइंट ऑफ व्यू. भाई, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, नहीं तो क्यों बुलाया आपको मैंने? देखिए, मेरी बात सुनिए. बैरिस्टर, एक मिनट, मेरी बात सुनिए. आपकी पूरी बात सुनूंगा मैं. आपकी पूरी बात हाँ जी, बताइए. देखिए, मेरी बात सुनिए. आपकी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं मैं, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं. देखिए, बात यह है कि बालाकोट के लिए हम 80 किलोमीटर अंदर घुसे. चारू जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन. चारू जी, बालाकोट, ये कहते हैं घर में घुसकर क्यों मारा. हमने कहा हम घर में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं, हम 80 किलोमीटर अंदर जाके हमने घर में घुसकर मारा. ठीक है. We thought that you would get the message loud and clear, which you should have. It's in your interest. Right? First time during the surgical strikes, we went in 2 to 3 kilometers. It was a ground offensive. We went in, we carried out the offensive, and we came out. Balakot, we went 80 kilometers in. 80 kilometers in. Right? आप तो खुद तस्लीम 1 minute, कर रहे हैं one minute. I don't know Urdu. Don't talk Taslim with me. I am not a speaker of Urdu. Please, either you, या तो हिंदी में बात करो, I don't know Urdu, I don't know Persian. I want to speak either in English or Hindi to me. All right, so thank you. So so don't use these highfalutin Urdu words with me. I'm not speaker of Urdu. The point is, please remember that Islamabad is only 300 kilometers from Wagah. Please always remember, this is 15 minutes in the range of the Rafales. And please understand, we have these S-400 systems. We can finish your entire air force within seconds. In fact, Samar was telling me today, we are so enabled with drones and AI right now. They won't know, we need not even deploy. Right? Am I right, Samar? You want to tell them with the kind of equipment we are sitting on? No, 1 minute. See, please understand. Clear skies, 7 minutes. Samar, tell them if there are clear skies, it will take 7 minutes. And you must hear the language of the Prime Minister. Prime Minister क्या कहा चारू प्रज्ञा जी? प्रधानमंत्री ने कहा कि, और अंग्रेजी में कहा, तो सारी दुनिया सुन ले. चारू जी कुछ कह रही हैं आपको. बीजेपी स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा बोलिए इनको. सारी दुनिया सुन ले. आप इनकी बात सुनिए. अब हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोले हैं कि आप सबको समझ में आ जाए. इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर, व्हिच मींस यू पाकिस्तान. वी विल परस्यू द टेररिस्ट टू द एंड ऑफ द अर्थ. They will be punished beyond their imagination. And Arnab, it's already started. The retribution, the revenge, it has already started. India has already gone a step further than it has ever gone. Cancellation of the Indus Water Treaty is a step which has never been breached before. Never. Wars, attacks, pehle surgical strikes hui, Balakot hua, but never has the water flow to Pakistan stopped. Louder for Barrister. Louder. He's saying something. Barrister saying something. इंडस वाटर ट्रीटी पे 2023 से 2023 से आप बात कर रहे हैं. आप बात करना चाह रहे हैं. I am not speaking to the terrorist state of Pakistan. Let me speak. No more. I am आप not सबसे बड़ा फैक्ट आप इग्नोर कर रहे हैं कि आप लोगों का इंटेलिजेंस फेलियर है. आप लोगों का अपना इंटेलिजेंस फेलियर है. Okay, now point is for one minute. Just 1 minute. First of all, Barrister, can you not speak over her? I'm letting you speak. आप जब बोल रहे थे सुन रही थी, है ना? Be decent.
आप Be मुझे decent. बोलने देंगे Be बाद decent. में? Be आप मुझे decent. बोलने Be देंगे decent. बाद में? आप आप decency मुझे से बात बोलने करें. देंगे बाद में? She's speaking अगर आप here. बोलने देंगे, Don't मैं speak चुप over her. Don't speak over. Hear her and then respond. Okay. Charu Pragya, Arnab, thank you. let's stop calling it a terror attack. Let's say it was a terror attack and an attempt at Hindu genocide. As many as they could find, they were all gunned down. Let's understand this was not an attack on a military base. This was attacking the heart of India because tourists, families, couples were attacked and they were selected. They were selected on the basis of their religion. So the terror state of Pakistan has no say right now. Like I said, we've gone a step further than we've ever gone before. You know, you used to say we will make India bleed with 1,000 cuts. No more. Now you are going to bleed. And blood and water cannot flow together. Or one more thing I want to show tonight, viewers. Let me- For Brigadier, I want to show you a picture. For Brigadier, one minute. I have a Batuni barrister tonight, but I'm talking to Brigadier. You know why this incident happened? Yeah, what's his name, Brigadier? What, Brigadier? Brigadier, I have a picture for you. बीच में आप बोले जा रहे हो। Arnab, one more thing I Brigadier, want one to minute. add. Brigadier Waqar Khan को कुछ कहना चाहता हूँ. Brigadier Waqar Khan, this is Arnab here. Can you hear me? आवाज आ रही है क्या? इंटेलिजेंस फेलियर है। आवाज आ रही है क्या, Brigadier साहब? I can hear me. Can you hear me? इंटेलिजेंस You were talking about 1965. You were talking about 1965. 1 minute. KK and Brigadier only on two sides of the screen. I have a gift for Brigadier. I have a gift for Brigadier. I have a gift for the Brigadier. which is wrong. I have a gift for the Brigadier. Brigadier, I have a gift for the Brigadier, all right? Can I give you my gift? Can I give you my gift? First of all, I want this side, that camera to be shown tonight. Move the camera on that side. I want to show what's written here. I want to show something to these people. I want these Pakistanis to understand how we feel. I want that camera shot. Viewers, I want all of you watching the program tonight, all these Pakistanis, ये जितने पाकिस्तानी हैं, हमारी पहली गिफ्ट इनको क्या है? Is that shot? I want that, the one on this side. Can I have that on camera 4? Can it move in? Jib shot. I want that wall to be shown because that wall is a picture of Narendra Modi. Get the camera right. Give it headroom. That's it. I want all the Pakistanis watching to see this. This is the message from the Republic Studios to you. This is a message with our compliments. और जितने पाकिस्तानी हैं, आज याद रखिए, डेट भी देख लीजिए, आज 24 तारीख है. And this is our promise to you. We will hunt you down, and this is the promise of one of the greatest leaders in the world today. In fact, the greatest global leader, Prime Minister Narendra Modi has said, we will hunt you down. We will hunt you down. Take a look at that. हाँ, चश्मा पहन के देख लीजिए. We will hunt you down. We will get you. And now let me show you, Brigadier. Show him smiling today. I want to show him a picture. Ye smiling photo. Show his smiling face. Show the Brigadier smiling face. Now I'll show him a picture. उसके बाद हम सब देखेंगे इनके स्माइल का क्या होता है. एक मिनट. ये देखो. ये तस्वीर देखो. ओ ब्रिगेडियर पाकिस्तानी. ये तस्वीर देखो. ये है इंडियन आर्मी लाहौर में 1965. ये 1965 की तस्वीर है. अरे देखो, जूम इन. 1965 की तस्वीर है इंडियन आर्मी इन लाहौर. देखो, हाँ देखो, चश्मे खोल के देखो. पाकिस्तानी, ये तुम्हारे देश के, तुम्हारे धरती में घर में घुसकर मार रहे हैं बहुत सालों से. ये तस्वीर देखी कि नहीं? क्या हुआ? क्या आवाज निकल गई? आवाज निकल गई. और एक तस्वीर दिखाता हूं. I want to show these Pakistanis the reality of the coward state that they are. इनके गर्दन को पकड़ के, इनको गले से पकड़ के इनको थप्पड़ मारना पड़ता है, तभी इनकी अकल आती है. I want to show you one more picture. ये देख लो. हामिद आ जाओ. हामिद, ये गिफ्ट हामिद खान के लिए है. देखो, ये तुम्हारे डरपोक जनरल नियाजी. ये तुम्हारे डरपोक जनरल नियाजी हैं और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा है. 16 दिसंबर 1971 साइनिंग ऑफ द सरेंडर एग्रीमेंट. ये सरेंडर वाली फौज, ये सरेंडर वाली फौज, ये डरपोक पाकिस्तानी, के मार खाने वाले पाकिस्तानी, जिनको पकड़ पकड़ के मारो जितना कम होता है, ये डरपोक पाकिस्तानी.
दिस इज द रियलिटी। ये गालों पे हाथ रख के ये पोज करने की कोशिश कर रहे हैं नोने वाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट 1971। ये स्टेटमेंट है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कहते हैं इसको, सब लोग देख लें। ये देखो, सबको रखिए, पाकिस्तानियों को दिखाइए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। ये बुज़दिल फौज, ये सरेंडर की हुई फौज। इट्स अ सरेंडर्ड कंट्री, अ सरेंडर्ड कंट्री। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। पढ़ के सुनाऊं? The Pakistan Eastern Command agrees to surrender all Pakistani armed forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagjit Singh Arora, General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangladesh Forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all Pakistani land, all Pakistani air and naval forces, and also all paramilitary forces and civil armed forces. These Pakistani forces will lay down their arms and surrender at all the places to the Indians. They will immediately surrender to the command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. Signed, Lieutenant General Amir Abdullah Khan Niazi. Come on. ये फिर साइन करेंगे। He'll sign it again. General Sinha. General Sinha, time to make them sign another one. I am General Sinha. years for that. And Make this bloody Pakistani surrender again, General Sinha. we will. Hamid भाग गया। We will instantly. Hey, gone. And now, Fully prepared now. Behind Prime I will Minister show you Modi. one thing here. All in. I All in for want to this. show All the in for these brigadier. Pakistanis. Get them now. I want to show the brigadier. Show it to him. Just folks in. This is I was 5310. I want to show this brigadier. Brigadier, this is the Kargil war. This is the Kargil war. 5310 inside Pakistan. We captured that. Still we are holding. We have not declared it. It is inside Pakistan, in Sakardu. You said, na, you were there in Kargil war. You know this? Yes, I was. This is 5310 of Pakistan. We are There holding are five in forces. Sakardu. There are I five captured it. forces My also. battalion captured this. Yes. You know this? We have five You, Pakistanis have run away. Brigadier, you ran away from here. This is No, 5310 captured by my battalion. You can see me there. While he was crying, what Pakistan Army did. Bloody in nose. Kargil, You I have the covered. video. You I have the covered. video that he was You saying cowards. that- Run away from there. Leaving your dead bodies. Your dead bodies. This is your. Hell out of Mind you, all places of heights of POK, Brigadier. we are going to capture like this only. Up to Brigadier. Louder, Brigadier. I want to hear this. Listen. What did she say? We did it, He was crying. Brigadier. You can see this. You can see this. You see more. You see this. You see this. This is not war. Yeah, come We on. are coming. We are coming Bring to your- all heights of POK. We are coming here. And we will. Don't we will worry. give you another 100 years. We will tell Because Suleiman just Ki, 71 you want to was see a more? break. You want to see more? 100 years. You that time see is this? coming. But we are going Mind to you, do and, Arnav, the Pakistani Battle of flag Barki you are on the showing of airport. 65. Bring, That is bring, the bring it, battle Suleiman. fought by my battalion, Forsake. We were sitting on a Chogal Canal. We left it that time. Our mistake. I totally agree. Otherwise, the Lahore Battle of Barki and Chogal Canal, Asal Uttar battle. This brigadier was talking about 65 battle. Louder, Brigadier, He louder. doesn't know Louder. Brigadier, the louder. Battle of Chamjoria. Brigadier, louder. Can you talk? You were saying that you were there. Battle of Chamjoria, Battle of Barki, Battle of I was in Kargil. My unit 25 cavalry asked your army to destroyed Bakr Hind Division and destroyed 16 cavalry of General Chaudhary and 17 Pune Horse. And General Colonel Tarapur Patty's tank is standing in my unit. So that is a war trophy. That's the history of 25th Cavalry. You cowards. By shouting, you can ask what is Battle of Chaminda. 65. Was graveyard of Indian tanks. You coward. Let's come on, bring Louder, we decide in Go on, Charu on the left, Charu saying something to you, Charu, go on.
Charu, go on. Come on, bring your surma. You know what started this, Arnab? Terrorism hates prosperity. The fact that Kashmir was getting prosperous, standing on its feet, it had a record footprint of tourists in the last couple of years. That is what has shaken them up. That is what has shaken them up. And we need to make sure that we retaliate in a language they understand. Yeah, ये absolutely. ब्रिगेडियर पहली बात तो मेरे को ना झूठे नकली लग रहे हैं ये ब्रिगेडियर, लेकिन understand our hearts are united in both grief and resolve. And Bharat is speaking in one voice today. We are going to get revenge. Like our PM said, we're going to hunt you down and we're going to get our revenge. We're going to get justice. I want to also ask this. Hamid Khan has come back now. Hamid, why are you such cowards? Now you're saying हमने नहीं किया, हमको मत मारो, हम responsible नहीं हैं, हमारा लश्कर-ए-तोयबा के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमको हाफिज सईद के साथ कोई लेना देना नहीं है. नहीं ये कल से, since yesterday, कल से इनकी narrative एक ही है. जेल बख्शी कि हमको मत मारो, हमको मत मारो. देखना no अरे if you can then you own up. No, your army chief, one minute, your army chief said attack Hindus. Your army chief said your army chief asked for attack on Hindus. Your army chief called for an attack on Hindus. Your army chief spoke that language, that coward Asif Munir. Your Saifullah Kasuri, who works with Hafiz Saeed, said by February 2nd, 2026, we will seize Kashmir. और आज वीडियो डाल रहे हैं, हमको मत मारो, बहुत अफसोसजनक है. अरे अभी बोले, अरे 1 minute. When he was in Khyber Pakhtunkhwa, 1 minute. When he was in Khyber Pakhtunkhwa, he said, हिंदुओं को मारो, इंडिया को टारगेट करो, 11 महीने में कश्मीर लो. और आज बोल रहे हैं जो कुछ हुआ, जो नुकसान हुआ, उसका निंदा करता हूं, ये अफसोसजनक है. What nonsense, what a coward he is. ये और एक पाकिस्तानी वहां पे अपनी सोच, अपनी डीएनए, अपनी सोच दिखा रहा है. No, why did he say सैफुल्लाह कसूरी and आसिफ मुनीर? और अबू मूसा ने कहा कि वहां पे अगर कोई भगवान श्री राम का नाम लेगा तो उसकी गर्दन काट लेंगे. I am speaking the truth. Then there is no point for Yes, joining speak. again. Defend yourself. Let me see. No defense. The Chief of Army Staff's speech, which you are referring to for overseas Pakistanis, I was the master of ceremony and I was there. And Shame on you, man. Shame on you, you Hamid Mir, you ISI stooge. मुझे हमेशा पता था पैसे लेते हो आप आर्मी से. उसने कहा हिंदुओं पे अटैक करो. If you listen to he said he called for an attack on Hindus. He said हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदुओं को टारगेट करो. उसके बाद सैफुल्लाह कसूरी ने बात कही, उसके बाद अबू मूसा ने कही. Your Modi have got the Waqf Amlak board. What are you doing to the Muslims in India? You are proving that two nations. Bloody hell! You dare talk about the Waqf? You dare talk about the Waqf? You are trying to do this here. We are coming for you, man. Why did? No, 1 minute. Why did Asif Munir ask for an attack on Hindus? No, it's not. It is. Why did he ask for an attack on Hindus? एक आर्मी चीफ वहां पे स्पीच दे रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करो. क्यों किया? I will reply. आप वहां पे थे ना? You are the master of ceremonies ना? आपने बुलवाई. आपकी सोच, आपकी गंदी सोच. That was a very clear speech and message to you that if you will keep conspiracy against Pakistan and if you will keep doing the terrorism in Jafar Express and everywhere. ये मैसेज है, देखो. ये मैसेज है. 1 minute. समर इसने मान लिया प्रोग्राम पर. ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज था, इसने ऑर्गेनाइज किया, इस हामिद मीर ने ऑर्गेनाइज किया. समर इसने मान लिया कि हम टारगेट कर रहे थे. These guys. This is the man who has done. I want to tell you one thing. He's admitted things on my program. I want to tell you one thing and one thing very clear. I want to make one thing amply clear to you that Captain Imtiaz Malik and Captain Colonel Sher, Captain Imtiaz Malik और कैप्टन कर्नल शेर की बॉडी तो ले जाओ. बुज़दिल पाकिस्तानी
You are तुमसे on English अच्छे तो channels. गिरे हुए You are इंसान on है, English language तुम तो channels. गिरों से भी गिरे हुए हो, You can't speak English. खुद Please just खुद go away. थूक के उसे ही चाटते हो. If You can't lick your speak own English, spit. then why You are do here? not even own your own soldiers. तुम Okay. जाफर Okay. एक्सप्रेस के You- टाइम अपने 200 फौजी भी नहीं बचा सके. Look, you जो carry on तुमने your फ्रंटियर I don't कोर mind. के No, he has जवान admitted. और No, अफसरों important को- thing is important. I want to go to General Bakshi. 1 minute, Samar. Let me go to General Bakshi. General Bakshi, he has admitted. He has admitted that that speech of Asif Munir targeting Hindus and the speech of Saifullah Kasuri of Hafiz Saeed and Abu Musa elite commander are all linked. This man has admitted. Do you understand This the man, do you two-nation understand? theory? This man has Do you understand admitted. the two-nation theory? Absolutely. This man has made an admission Arnab, on my program. can I have a word? Please, General Bakshi. Can you? Arnab, can I have a word? And now they are saying don't hit us. Arnab, this man is a boot liquor. This man No. is a boot liquor I'm showing class you the real A, face. right? I'm showing I know. you the Asim real Munir, face. General Asim I am Munir showing is you about to the real retire. face. He is reaching I am the showing end of the his real tenure. face. And like all Pakistani showing you generals, the he real wants face. to hang on And it is the even at the two-nation cost theory, of an first of India-Pakistan war. And here are the hangers-on, the If you bootlickers want- from the civilian you want to side keep- who if become you want masters to of experiment the ceremony war, at then a ceremony where, you know, his beloved chief, No. army He chief, showed you is the reality. making a presidential you- speech, showed is you trying the to reality, gain first of another few years in office. The fishes and loaves of office are too tempting. Okay. You know, Arnab, Okay. Martin Rubin, General G.D. a Bakshi. top-rated American defense specialist, has recently made a statement just yesterday. Yeah. And you know what he has said? Yes, sir. Asim Munir is worse than Osama bin Laden. Absolutely. Osama bin Laden. And at ladies and least gentlemen, that's a big stayed admission in on the my cave program where you have Hamid there. Hamid has admitted that the statement of the Pakistani army was well planned and in conjunction with the Lashkar-e-Toiba and Saifullah Kasuri, that it was all part of a plan. There can be no greater admission than that. But the problem is we also have snakes within. We have people in our country who do politics at a time like this. I'm going to call them out when I'm back. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate.